Now today in this lecture I am going to derive Ohm's law. So this is the theoretical derivation, experimental verification that you will do in laboratory. Theoretically, how will you derive the Ohm's law, that I am going to explain. Now see here, what is Ohm's law? Here it is already written that if physical conditions of the conductor remaining same, physical conditions, yesterday I have told that the length, area of cross section, tension in the wire, these factors are the physical conditions and they majorly depend upon the temperature. As long as temperature of the conductor will remain same, what will happen? Its length, area of cross section and tension will remain unchanged. So if physical conditions of the conductor remaining same, then V upon I will be constant. मतलब क्या है, V और I की कुछ भी वैल्यूज हों, बट V upon I हरदम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सपोज दिस इज ए कंडक्टर. Suppose on applying potential difference V1 across it, what is the current produced? I1. When you have applied potential difference V2, current is I2. When you have applied potential difference V3, current is I3. Experimentally we do like this only. For different values of voltage across the conductor, we determine current passing through the conductor, and then each time we will determine V1 upon I1, V2 upon I2, V3 upon I3. We will find out that V upon I remain constant for a metallic conductor. It's clear? As long as temperature is not very high, V upon I will remain constant. Means metallic conductor obeys the Ohm's law up to a good extent. Up to a good extent. When the temperature will become higher, then what will happen? V upon I will take some other value. Some other value means some higher value it will take. It's clear? So see here, how will you deduce it theoretically? So you can see here. Now derivation you can see. Here we have assumed, you can write in the same way. We have assumed that there is a conductor of length L, having area of cross section A. Let on applying a potential difference V, what is the current produced in the conductor? Is I. It's clear? Where there is a conductor of length L having area of cross section A. When a potential difference V is applied across it, what is the current produced? It is I. So as you know that this current is given by I equals to N into E into A into Vd. What is N? It is the free electron density present in the metallic conductor. Means number of free electrons per unit volume. A is area of cross section, E is the charge on the electron, Vd is the drift velocity. And drift velocity, as you know that, it is given by Vd equals to A into tau. A is acceleration of the electron and tau is what? It is the average relaxation time which is spent by the electron in between two successive collisions. Now this A can be written as E, ये क्या है? जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, it will be the acceleration of the electron into tau. It's clear? Now see here, what will be the value of capital E? If you see the value of capital V, capital E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है? V. What is the length of this? It is L. Therefore E equals to V upon L. E equals to V upon L. So we can write E V tau upon M into L. This will be the expression of the drift velocity. It's clear? Now you take these two, I and Vd. Here in place of Vd you put this value. When you will put this value, it will become
here you can see I equals to N E A, and in place of Vd you can write E V tau upon m into L, that is E V tau upon m into L. Now you simplify this, so this will be N E into E square, it's clear, then A into tau, E into E square, then A into tau into V, divided by here m into L, m into L. This is the value of I. It's clear. Now you find out I upon V. I upon V कितना हो जाएगा? V को यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आए LHS में, I upon V. So this will be equal to N E square A tau upon ml. Now we will rearrange the term. We will write this thing in one bracket, N E square tau upon m into A upon L. This is the value of I upon V. It's clear. So if you see what will be V upon I, इसका उल्टा कर दें, V upon I. When you will do ulta of that, so it will be m N E square tau into L upon A. What is m? It is the mass of the electron. N free electron density. E, it is the charge on the electron. It's clear. Tau, it is the average relaxation time. L, length of the conductor. A, area of cross section. इट्स क्लियर. अब सबको ये मालूम ही है कि m और E तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का और चार्ज इलेक्ट्रॉन का. दीज वैल्यूज डू नॉट गोइंग टू चेंज. n क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. अगर कंडक्टर क्या है, कापर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10⁻24 per meter cube. If it is of silver, then it will be 10⁻29 per meter cube. It's clear. So it depends upon the nature of material of conductor. Tau is average relaxation time, which depends upon the temperature. When you will increase the temperature, yesterday I told, when you will increase the temperature, what will happen? Electrons का motion और vigorous हो जाएगा. It will become more violent. They will suffer more frequent collisions. More frequent collision मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी. इट्स क्लियर. बट अगर टेम्परेचर सेम है तो ना तो टाउ में चेंज होगा, ना देयर विल बी एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ n. इट्स क्लियर. L and A also depends upon the temperature. So from here you can see that as long as the temperature is same, what will be? These terms will remain unchanged, n in tau, L and A. As long as temperature is same, these terms do not going to change. And when they do not going to change, then what will happen? V upon I क्या हो जाएगा? It will become constant. V upon I will have a fixed value, means constant. It's clear. As long as temperature is constant, then V upon I will be constant, because those terms depends upon the temperature. Therefore Ohm's law is verified. Ohm's law is verified. It's clear. This is the derivation of Ohm's law. Now what is V upon I? So yesterday I have told that ratio of potential difference to the current, that is called the electrical resistance of the conductor. Means V upon I is what? It is resistance.
R equals to V upon I. Therefore we can write it as M upon NE squared tau into L upon E. This is a important term that you derivation. R equals to M upon NE squared tau into L upon E. It's clear? Now after this I am going to explain you about the electrical resistivity. Electrical resistivity, that is specific resistance. What is the meaning of specific resistance? So see here, you leave it as it is. It's clear? Now what is resistivity? So resistivity, its symbol is rho. It is denoted by rho. Resistivity. Its other name is specific resistance. Specific resistance. So it is denoted by Greek letter rho. So see here, resistivity of a metallic conductor, it is defined as the ratio of electric intensity to the current density. It is defined as the ratio of electric intensity to the current density at any point of the conductor. Now see here, what is its meaning? अगर हम ये देखें, एक ये हमने कंडक्टर लिया है विच इज ऑफ अनइवन क्रॉस सेक्शन. अनइवन क्रॉस सेक्शन. इट क्लियर? जो I की वैल्यू यहाँ पर होगी वही I की वैल्यू यहाँ पर होगी. मीन्स वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन. I मीन्स चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. Potential difference, it is defined for whole conductor. Potential difference defined for whole conductor. It is not the property of any point. Potential difference. It is clear? तो I और V क्या है? These are the constant for the whole conductor. These are the constant for the whole conductor. But when you will apply some potential difference, what will happen? An electric field will be developed. और वो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रा करें, देन दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन? दे विल गो इन दिस वे. यू कैन सी हियर, हियर लाइन्स ऑफ फोर्स आर मोर क्लोजर, हियर लाइन्स ऑफ फोर्स आर लेस क्लोजर. और जब लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पर जिस रीजन में अधिक पास होती, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? अधिक होती है. सो हियर वी नो, if you take electric intensity E1 here E2, then E2 will be less than E1. E2 की वैल्यू E1 से लेस होगी because the electric lines of force are farther apart here they are closer. Similarly the current density, current passing per unit area. अब current तो दोनों क्रॉस सेक्शन पर सेम है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन स्मॉलर है, देयरफॉर करंट डेंसिटी विल बी मोर हियर एंड इट विल बी लेस हियर. दैट आल्सो यू नो. इट्स क्लियर? सो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी दे मे डिफर एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर. उनकी वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर पर डिफरेंट होंगी, जबकि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, this is defined for whole conductor. This is defined for whole conductor. That's why we call these as the macroscopic quantities. Macroscopic quantities. And these two we call as the microscopic quantity. Means which change, which have different values at the different points of the conductor. It is clear? So this you will keep in your mind. अब हम resistivity बताने जा रहे हैं. So what is resistivity?
resistivity of an electrical conductor is defined as the ratio of electric intensity to the current density at that point of the conductor. मतलब अगर यहाँ पर current density J है, electric intensity यहाँ पर E है, then what will be rho? Rho is defined as E upon J, ratio of electric intensity to the current density. It's clear? If you find out the same here, same ratio E upon J at that cross section, that will also come out same. जो E upon J की वैल्यू यहाँ होगी वही E upon J की वैल्यू वहाँ भी होगी. Now what is E? So this is the definition of the resistivity. अगर resistivity की definition आएगी तो यही लिखी जाएगी. Resistivity of a metallic conductor is defined as the ratio of electric intensity to the current density at any point of current carrying conductor. Now as you know that E is what? E is V upon L. What is J? I upon E. अगर हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखें, what will you get? You will get E के प्लेस पर V upon L, इसके प्लेस पर I upon E. When you will rearrange the term, it will be equal to V upon L into A upon I. इसको फिर से हमने रीअरेंज कर लिया, V upon I into A upon L. Already we know what is V upon I, that is the resistance of the conductor. Therefore rho equals to R into A upon L. And from here if you write the formula of R, तो R का फार्मूला मतलब इसको हमने ऐसे लिख लिया. अगर हम R का फार्मूला यहाँ से बनाएं, then it will be equal to rho into L upon E. This you have studied in the class 10th also, this formula. So R equals to rho into L upon E. Now if you compare that value of R with this value of R, अगर R की ये वैल्यू उस वैल्यू से कंपेयर करें, L अपान ए, L अपान ए, रो के प्लेस पर यहाँ पर ये ब्रैकेट है, सो वी कैन राइट व्हाट इज रो हियर. रो इज M upon any squared tau, any squared tau. You can see it once again. It's clear? अगर हम R की दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में देखेंगे L अपान ए के प्लेस पर L अपान ए है, रो के प्लेस पर यहाँ पर ये ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू क्या है, M अपान एनी स्क्वायर टाउ. इट्स क्लियर? नाउ एज वी नो दैट N और टाउ की वैल्यू ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं. इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ विल डिक्रीज. N की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा. सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, क्योंकि ये तो हमने बताया ही है कि V अपॉन I की वैल्यू क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है फॉर मेटेलिक कंडक्टर. It's clear? But in the moderate range of temperature, this remain constant. There will be no significant change. It's clear? Now see here. From here we will deduce the definition of the specific resistance. पर अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे? Resistivity of a metallic conductor is defined as the ratio of electric intensity to the current density at any point of current carrying conductor. It's clear? Now see here. Now rho equals to R into A upon L. Now what is the definition of rho deduced from this formula?
if we take L equals to 1 unit, 1 unit means 1 meter, 1 centimeter, कुछ भी, A is 1 square unit, एरिया है, so 1 square meter, 1 square centimeter, like that. Then what will be rho? It is R into 1 upon 1, that is equals to R. Now you can write this. Resistivity of a metallic conductor, it defined as the resistance of unit length conductor of that material whose area of cross section is unity. जब वैल्यू 1 होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिटी. इट्स क्लियर. मीन्स you listen once again, resistivity of a metallic conductor, it defined as the resistance of unit length conductor of that material whose area of cross section is unity. And since here we are studying about the metallic conductor, that's why I am saying metallic conductor again and again, though all these things are also correct for the other conductors also, or other current carrying conductors also. So resistivity of a current carrying conductor is defined as the resistance of unit length conductor of that material whose area of cross section is unity. It's clear. Now after this we will deduce the definition of a unit of rho, SI unit. तो R की यूनिट क्या है, ओम है. एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. So this is cancelled, that is rho ohm meter. It is ohm meter. It's clear. Now after this I am going to explain you, जैसे कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, हमने बताया था, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी. What is the reciprocal of resistivity? It is called the conductivity. It's clear. Which is denoted by the symbol sigma. Conductivity. Conductivity, you can see it is denoted by the symbol sigma. Sigma equals to 1 upon rho. Means conductivity is defined as the reciprocal of resistivity. It is clear. Now as already you know that rho is what, E upon J. तो अगर हम पूछे सिग्मा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा तो इसका उल्टा है. सो व्हाट विल यू राइट, J upon E. So what will be J? It will be sigma into E. अब सब लोग देख लें, रेजिस्टिविटी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, स्केलर होगी. बट करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी. सो इन वेक्टर फॉर्म वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये सबको मालूम होना चाहिए. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इट इज क्लियर. एंड व्हाई वी कॉल इट एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, बिकॉज J and E आर द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स. नाउ आफ्टर दिस there is one more point, dependence of resistance on the dimensions of the conductor. Dependence of resistance on the dimension of conductor. Dependence of resistance on dimension, and dimension is governed by length and area of cross section on L and E. मतलब R की वैल्यू L पर कैसे डिपेंड करती है, R की वैल्यू रो पर, A पर. So this you already know. From here you can see that R is proportional to L. More the length, more will be the area of, more will be the
resistance. More the length, more will be the resistance. Then resistance is inversely proportional to area of cross section. Inversely proportional to area of cross section means suppose एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, तो तुमको मालूम है थिक वायर का ए अधिक होगा देन थिक वायर का, थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा देन रेजिस्टेंस विल बी, हियर रेजिस्टेंस विल बी मोर एंड हियर रेजिस्टेंस विल बी लेस. इट इज क्लियर. मीन्स थिनर वायर है वो मोर रेजिस्टेंस देन थिकर वायर, थिनर वायर है वो मोर रेजिस्टेंस देन थिनर वायर, थिकर वायर. थिन वायर का रेजिस्टेंस अधिक होगा थिक वायर के कंपेरिजन में. नाउ सपोज दिस इज ए कंडक्टर, इट्स लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. नाउ इफ लेंथ इज increased n times by stretching, मतलब अगर हम खींच कर लेंथ को n टाइम्स कर दें, n टाइम्स बढ़ा दें, आए समझे. मतलब पहले लेंथ थी L, अब लेंथ क्या हो जाएगी n टाइम्स ऑफ L. तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा. तो हमने ये एज्यूम किया कि लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R है, R1 है, ले लेते हैं. सो सी हियर बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग. What is length here? L. Now it has become N into L. What is area of cross section? A. Area of cross section will become A upon N. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम तो बढ़ना नहीं. वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम इज LA हियर. दिस इंटू दिस, दैट इज ऑल्सो LA. रेजिस्टिविटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी रिमेन अनचेंज्ड. What will be resistance here? So resistance is here R equals to, you can write rho into L upon A from here. What will be resistance here? R dash rho into L is how much? L is N into L. Area of cross section is how much? A upon N. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो n तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम n स्क्वायर रो इंटू L अपॉन, दैट इज n स्क्वायर R. मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज n स्क्वायर टाइम्स. अगर लेंथ को खींच के n टाइम्स कर दें, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा. मतलब जो पहले होगा उसका n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा. सपोज रेजिस्टेंस लेंथ को हम 2 गुना कर दें L से 2L, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस अगर पहले R था तो अब कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू R, दैट इज 4R. 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R. अगर लेंथ को हम क्या कर दें, L से 3L कर दें, रेजिस्टेंस पहले R था, अब कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू R, दैट इज 9R. इट इज क्लियर. मीन्स अगर लेंथ को खींच के n टाइम्स बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहले से n स्क्वायर बढ़ जाएगा. नाउ सी हियर, इफ द वायर इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, वायर को फोल्ड कर दें, तब क्या हो जाएगा इफेक्ट? सो दैट ऑल्सो यू कैन सी, इट इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्डेड ऑन इटसेल्फ? वायर इतना बड़ा है. इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया.
इफ इट इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब इसको क्या है 3 फोल्ड्स में फोल्ड कर दिया। तो देख लो पहले लेंथ L थी, अब लेंथ क्या हो जाएगी L/N। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा A × N, मतलब Na। resistivity will remain unchanged. What will happen to resistance here? It will become rho into L/A। पर अगर यहाँ देखें तो R डैश इक्वल्स टू रो, L कितना है L/N, A कितना है N इंटू A। What is N into N? N square means it will become rho into L/A means R/N square। Means if a wire is folded on itself n times, what will happen to its resistance? Its resistance will decrease n square times. For example, if it is doubled on itself, यहाँ resistance R है, अब कितना हो जाएगा R/2 स्क्वायर, मतलब R/4 हो जाएगा। इट इज ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ मीन्स R/3 स्क्वायर, दैट इज R/9। सो इन दिस लेक्चर it is up to this. Now in the next lecture we will explain you dependence of resistance and resistivity on the temperature for the different type of materials.